अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग एक डिफरेंट रेसिपी बना रहे हैं। चिकन और ब्रोकली मिक्स करके ब्रोकली चिकन बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी भी है। चलिए नवाब्स किचन के स्टाइल में आसानी से कैसे बनाते हैं दिखाएंगे। ब्रोकली चिकन करी स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो पहले ही कट करे हुए इस ब्रोकली को वाटर में बॉईल करेंगे। ब्रोकली चिकन करी मेन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बाउल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम लोग इसमें रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे। फाइनली चॉप्ड ऑनियंस, ऑनियंस थोड़ा सा कलर चेंज होते ही हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड गार्लिक और उसके साथ साथ स्लाइस्ड ग्रीन चिल्ली भी ऐड करेंगे। इमीडिएटली हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड टमाटोस भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बाद हम लोग इसमें ग्रीन पीस भी ऐड करेंगे। ग्रीन पीस ऐड करते ही हम लोग इसमें टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट ऐड करेंगे। इन
सारे इंग्रेडिएंट्स के बाद हम लोग इसमें चिकन मसाला भी ऐड करेंगे, उसके साथ साथ कोरिएंडर पाउडर भी। नेक्स्ट चिकन ऐड करेंगे। चिकन 10 मिनट तक पके बाद हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड मिंट लीव्स ऐड करेंगे। इसी चिकन में हम लोग थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि अच्छी तरह बॉईल हो सके। अब 10 मिनट तक लिड क्लोज करके रखेंगे। जब तक चिकन बॉईल हो जाता तब तक हम लोग राइस भी पैक करेंगे। इसी चिकन को हम लोग और भी मज़ेदार करने के लिए हम लोग इसमें कोकोनट पाउडर भी ऐड करेंगे। जो पहले ही बॉईल करके रखे थे ब्रोकली वो इसमें ऐड करेंगे। इसी रेसिपी में थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए हम लोग ऑल स्पाइसेस पाउडर, गरम मसाला ऐड करेंगे। रेसिपी कंप्लीट हो गया है। इसी में फाइनली हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर ऐड करेंगे।
ये वीडियो देख के आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए और ज़रूर लाइक करिए और हमारे नवाब्स किचन फेसबुक पेज पे भी फॉलो करिए, ढेर सारे वीडियोस देखिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारी टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।